जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्य अन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। So this is a verse from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 9, verse number 14. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Purport: the Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about the Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion. Shravanam Kirtanam Vishnu and Smaranam, remembering Him. Such a Mahatma has strong determination to achieve. At the ultimate end, the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like that of 11th day of the moon, that is Ekadashi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. As described in the second verse of this chapter, not only this devotional service is easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. He can live this life in devotional service guided by an expert spiritual master. And in any position, either as a householder, as a sannyasi, or a brahmachari, in any position and anywhere in the world, he can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, a great soul. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. So welcome all of you for our Monday weekly session on Bhagavad Gita. Hare Krishna.
So we have been discussing on Srimad Bhagavad Gita's basics before we began with actually the chapters and verses. So the first topic that we have taken is search for happiness, right? So last time we covered two sutras. No, let it go on. Just you can slow down the fan. So you remember the first sutra? Yes. What is that? Self. Correct the equation. Equation of your happiness. Yes. Correct the equation of your happiness. Have no expectations. Okay. By the way, how all of you are feeling today? Super. Fantastic. Okay, the whole world. Happy. So today instead of Hare Krishna, we should say Jai Sri Ram. Same. Yes, and the same. Depending on your flavor, which aspect of Godhead you like. Yeah. So the first thing we discussed was correct your equation for happiness, right? Yes. So what did you learn from that? And did you try to apply? You should try something, some small steps. It's like making a Sorry? friend. I've tried not to have expectations. Okay, so you went to the second one. Yes. Change your expectations. Okay, first. First one, I do early in the morning, I get up and do meditation. Okay. I go inside. Okay. Means you're trying to invest some time in With something other than those things with which we have been dealing for throughout our life. So that's why I have brought one bag. So those two bags are there. I think today is an auspicious day. Right. And today we should distribute that. And with that you will try to experiment. Basically when I am saying you try to change your equation means simply you try to think something different than the normal, your regular routine. The routine thinking is what? Just How you do? Roti kapda makan. रोटी कपड़ा मकान. Yes. अब दुनिया उसके आगे निकल गई थोड़ा. रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल. Enjoy. Right. Anyway, so we'll distribute that at the end of the program. Or even we will try to chant one round together. Okay. Is that okay? Yes. Yes. Today is auspicious day, so that's why. So second one was change your expectations. Don't expect happiness from Others. others. What about you? Others means whom? Whom do you mean by others? My husband. Except Why? Anybody related to me. Any Okay. But is there anything wrong if you expect happiness from your, whoever is with you? it's not wrong, but we did not. Yeah, yes. That is not the Sure. only area for your happiness. Yeah. And we should not have unrealistic expectations. Should be realistic. अगर 10 रुपए में अगर एक गुलाब का फूल आता तो 10 रुपए में एक ही गुलाब का फूल आएगा, बंडल नहीं आएगा पूरा. Don't expect कि 10 रुपया देके इतना बड़ा गुच्छा ले लूँगा मैं. Similarly, this world offers limited happiness, and sometimes Prabhupada says there is no happiness only, in the sense that there is one definition. They say that happiness is actually a gap between two miseries. There is a small gap
आप लोग समझ रहे हैं? Yes. And that gap is actually हम बोलते हैं कि सुख है, but it's just a gap between two, you know. Yes. आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? Relax. Yes, so you should not have unrealistic, expectations. That's the second one. The third one is now today. That is, don't compare yourself with others. ये प्रॉब्लम कितने लोगों को है? You come, ये सबको है. Yes, सबको होता है ना. We compare ourselves with others. And why we compare? क्यों compare करते हैं हम लोग ऐसा? Self doubt. तो मुझसे बेहतर उसके पास है. Yes. Right? उसके पास Instagram पे ज़्यादा followers हैं। Yeah. So, if everyone wants to see, there is a competition in the same field. एक ही एरिया में जब कंपटीशन होता है तो प्रॉब्लम होता है. If suppose you are a businessman and somebody is a government officer or somebody is a teacher, two teachers will compete with each other to excel. A businessman will not compete with a teacher because there is no connection. वो बोलेगा और आप ऊपर बढ़ो. But two businessmen, they will fight with each other. Why? Because same area है ना. In that area, तो आजकल क्या है, सब लोग Instagram में, हाँ? मतलब this is just an example. But generally, we compare ourselves with others because of self-doubt. Second thing, lack of, is insecurity. We have insecurities. We feel insecure. Right? Insecurity का मतलब क्या होता है? Borderline fear. Yes. And why that fear is there? Because you have what? Because you don't trust. You don't trust. Okay? Because you think the other one is better. Okay. So basically, you can come back to the same point. The others are better than me. तो ऐसा सोच आता ही क्यों है हमारे पास? ऐसा किसने बोला कि आपसे अच्छा उसके पास है? Sometimes people around us make us feel that more than us. Okay, because the whole world is in that mood. Competitive mood. Grass Yes. is greener on the other side. Yes, grass is green on the other side. उधर जाने में पता चलता है कि ये तो सूखा है पूरा. Nothing. अपना ही अच्छा था पहले का यार. Correct. Some people talk about their troubles, some don't. But everybody has some trouble. Yes. तो इसलिए मैंने last time बोला था, there should be at least one person whom you can share your heart, Yes. pour your heart, and he will not judge you. तो आपने ढूंढा? ऑलरेडी है. भगवान तो है ही सबके. नहीं है. भगवान के साथ भी और चाहिए हमें. है. कुछ लोग एकदम सीरियसली देख रहे हैं. ढूंढ रहे हैं. Okay. So ये सबसे बड़ा बीमारी है, to compare ourselves with others. So we may compare our kids with others. आप कंपेयर करते हैं? वो पड़ोसी वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कितने समझदार हैं, गुणवान हैं, सुशील हैं. वो पहले करते थे पर अभी सब बिगड़ गए, तो किसको कंपेयर करेंगे? बट फिर भी करते हैं ना. खास करके जब when you go to some parties or some social functions, then you compare many things. Yeah. Sometimes, see क्या है कि आजकल ट्रेंड ही ऐसा है सोसाइटी का. People want to show off. अंदर सब्सटेंस नहीं रहता है कुछ, but they just want to show off.
मेरे पास इतना है, मैं ऐसा हूँ. See, I am so settled, I am so, peaceful, I am so comfortably situated, I am so perfect. Everybody wants to show like that. थोड़ा अंदर थोड़ा खोद के देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो पूरा खोखला है. Struggling like anything. But outside, they will show as if they are perfect. वैसे संसार में कोई दुखी नहीं है. बराबर? इसे आपने कहा ना इसलिए. नहीं, पर हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है दुखिया सब संसार पर जो चढ़े तो उतरे न पार. जब उसका नाम लिया तो सारे दुख से पार हो जाते हैं. ग्रंथ तो पढ़ेंगे तब ना. अब आज के लोग ग्रंथ कहाँ पढ़ते हैं? वो अपना ग्रंथ उनके पास रहते हैं मोबाइल में. That's the problem. The purpose of our discussion is ultimately to bring you all back to our basics. Yes. आज जो पूरे भारत में हो रहा है वो अगर रोज होगा तो there will be, you always talk about energy, right? Yes. So there will be positive energy. Right. The energy we are feeling today. Because everyone is just engaged in some base activities like eating, mating, sleeping, defending, that's it. Khana, pina, mauj karna. And that's why they don't have a proper understanding of for what I need to aspire in life. Right? And that's why people keep comparing with each other. एक बार एक लड़का, कभी आप फेल हो गए कॉलेज में? फेल हो गए आप लोग? Yes. अच्छा. एक बार एक लड़का 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, फिर भी बहुत खुश था. तो टीचर ने पूछा क्या हो गया भाई? बोलता दूसरा वाला 8 में फेल हो गया. That's why I'm happy. So his happiness is not because Yes, baby. वो ज्यादा फेल हो गया इसलिए मैं खुश हूँ. मैं भी फेल हो गया था. ISKCON में आने के बाद ये हमारा एग्जाम रहता है. We have exams on bhagavadgita and many other books. तो एक ईशोक मिश्र करके एक बुक रहता है. So way back in 2000, I think 9 or 10. So when I was in the ashram, so we have to give exams for these books to complete the course. So actually I failed twice. And मैं कॉलेज का जॉब छोड़ के आया था. I was a lecturer in the college. इसको बोले फेल हो गया तू? बोला हाँ फेल हो गया यार, क्या करूँ? The third time then I attempted and passed. So बाद में now I am teaching those subjects. So whenever our students they become a little serious, then I tell them, don't worry, मैं भी फेल हो गया था, पास हो गया बाद. That's an inspiration. I don't know. But to just make them little relaxed, I have to tell them. But this is a problem with all of us. Sorry. We keep comparing, and this comparison, sometimes we may think that कभी क्या होता है कि अभी because our search is for the better and better experience in life, not things but experience. We are searching for that experience, as we discussed, in the first session. So people think that अरे उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, उसके घर का सामान भी कितना अच्छी तरह रखा रहता है. आपको भी लगता होगा ऐसे किसी घर में जाते हैं तो कितना सब कुछ ठीक ठाक रखा है एकदम. तो कुछ लोग बोलेंगे आज प्रोग्राम इसलिए रखा है. या लोग ऐसा सोचते हैं कि वो उस बिल्डिंग में रहता है तो खुश रहता होगा. मेरा घर तो एकदम नीचे है चौल में, तो मैं खुश नहीं हूँ. या कोई बिल्डिंग वाला सोचता है यार तो चौल वाला कितना खुश है ना, उसके घर से कोई आवाज नहीं आता कभी. मेरे घर में कितना आवाज आता है, राइट?
whether you are staying in any situation of life, unless we are connected to our roots, we will never be happy, and we will keep comparing. इसलिए एक जगह पे एक पिता अपने पुत्र को बोल रहे थे, देख देख वो तेरे पड़ोस की एक लड़की थी, वो उसके स्कूल में थी, मैरी, बोले देख देख तेरे क्लास में वो पास हो गए और तू फेल हो गया। तो ये लड़का बोला हाँ, उसको देख देख के तो फेल हो गया। राइट? तो इसके अंडरलाइन रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस? दैट कंपैरिजन, व्हाट हैपेंस विद द कंपैरिजन? कंपेयर करने से our happiness goes down, isn't it? Yes. जो भगवान की कृपा से मिला है, खुश रहना चाहिए, right? Ultimately, things are not going to satisfy us, but our dealing and our consciousness, that will determine our happiness. हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा भी हो, लेकिन उसको कैसे यूज कर रहे हैं, that decides whether he will be happy or he will get distressed. So when you compare, then our happiness goes away because of two things. First, it brings envy. You know the meaning of the word envy, right? When somebody has better than us, we feel, why you should have better than me? I am the best and I deserve, although I may not deserve, but we say that, we feel that I deserve that thing and he should not get that. तो पड़ोसी का अगर एक टू व्हीलर रहेगा तो हम बोलते हैं मैं फोर व्हीलर लेके आऊंगा, वो भी फोर व्हीलर लेके आएगा तो मैं उससे बढ़िया लेके आऊंगा, and that competition can go on unlimitedly till the point of Brahma or Indra. Even in the heavenly planets, demigods they fight. If you read the Puranas, there are stories where demigods fighting with each other in the heaven. तो स्वर्ग में सुख नहीं है। आप सोचते होंगे कि अरे बॉम्बे में, कलीग में, we are suffering and struggling. If you go to the heavenly planets, there are demons attacking demigods. सुना होगा ना आपने? देवासुर संग्राम. There are so many stories. The demons attack. Why? Because there is an element of envy. And second thing, because of envy, it kills gratitude. So because of comparison. So two things. First is, it brings envy. An envious heart can never be happy because he always remains dissatisfied, discontent. He feels मेरे पास अच्छा है, उसके बाद अच्छा है. And because of that, there is a lack of gratitude. Gratitude मतलब क्या है कि अगर आप कंपेयर करेंगे, भगवान ने हमारे दो आंखें, दो कान, हमारे हाथ, सब कुछ सही सलामत है, तो खुश रहना चाहिए ना इंसान को, है ना? ऐसे कितने सारे लोग हैं किसी को देखने को नहीं होता है, they can't hear, you know, there are so many people like this. If you compare yourself with them, you should feel fortunate that by the grace of the Lord I have, you know, everything perfectly set. But because we keep comparing, just like, you know, कभी-कभी आप लोग जब भोजन करने के बाद में कुछ दांत में फंस जाते हैं, फंसते कभी-कभी, सौंफ का तिनका या धनिया का जीरा कभी-कभी, या कभी-कभी आम खाते हैं आप लोग तो the mango season वो उसका फाइबर, then आप देखेंगे कि हमारा our tongue will go to that teeth only जो अटका है. कल ही मैं लेक्चर कर रहा था मैं, कुछ तो अटक गया था, small something, while giving lecture
बार बार मेरा अटेंशन उधर ही जाता था, कुछ तो अटका है, कुछ तो अटका है, बोला यार रुके, आधे घंटे के बाद साफ कर देंगे. So other 31 teeth may be all right, but your attention will go to that only one teeth, where something is stuck. So similarly in life, there may be 99 things going well, but one problem somewhere, our mind just goes there only. ये problem, ये problem, ये problem. 99 ठीक चल रहा है ना, देखो ना भाई, किसी का तो 99 में नहीं ठीक चलता है, 50-50 रहता है किसी का, आधा जिंदगी ऐसी स्ट्रगल में जाता है, आधा कुछ तो ऐसा चलता रहता है. इसलिए that's why last time I think we took that exercise. Count your blessings. Count how many things you have which money cannot buy. Right? You need to count the blessings which God has given to us. Then you will never feel envious or ingratitude. We will not compare. We will always feel grateful for whatever we have received. Right? ऐसे कितने बॉम्बे में लोग हैं जिनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है. Right? उनको तो सब कुछ मिल रहा है sufficiently. There are mothers who abort babies. आपने सुना होगा कितनी बार, हमको अबॉर्ट नहीं किया इसलिए हम लोग जिंदा हैं आज. हमको अबॉर्ट किया होता तो कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए हमें. राइट? Similarly, if you in that line count all the blessings given by the God, then our heart, because see, and gratitude has also two sides to see. One is when things go very well in your life, you are grateful to the God. But when things go wrong, that time you blame or complain. But actually, our Guru Maharaj, Radhanand Swami, he says, if you are grateful, then be wholeheartedly grateful for good as well as bad. Right? Otherwise, this is not wholehearted gratefulness. आधा आधा ही हो गया वो. अगर भगवान ने अच्छा दिया है तो हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं. तो जब कुछ बुरा होता है हमारे जीवन में, तभी भी भगवान को थैंक यू बोलना सीखिए. Then you will be peaceful in life. तो अभी आप बोलेंगे जो भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा, उसको बुरा क्या हो सकता है? So that's another topic to go in depth that will come later. But I'm just giving you some glimpse of what we are doing. Because unless we go in depth, we will not discover the true nature of self. The true nature of self is to be always grateful. Jesus Christ, आपने उनके कोटेशन पढ़े होंगे बाइबल से, वो बोलते हैं कि when the right hand is giving some donation, don't let the left hand to see it. Right? Don't let the other hand to see. That's the whole story. Yeah. The beautiful stories in the Bible to learn. And of course, there are many other stories connected with this, but we'll just go ahead and because today we'll do some more kirtans. So this is third one, that is don't compare yourself with others. So next time you can try this. Before you come, you try to apply some principles here and there. तो इसके लिए क्या है ना कि लाइफ में कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड. यस, सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं हम लोग? अनलेस वी एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन आवर सेल्फ. अभी हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. हम लोग किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि ये मुझे हैप्पीनेस देगा, ये मुझे हैप्पीनेस देगा, ये मुझे हैप्पीनेस देगा, ये चीज मुझे देगी, ये चीज देगी या ये व्यक्ति देगी. Of course, person, if he is your friend, well-wisher, we definitely invest on them. But as we discussed, you should not have unrealistic expectations. But you should definitely invest on people.
more than on the things. Right? So this is third one. And the fourth one, so let's revise. What is the first one? Change equation of life of atoms. Yes. Try to think differently. That is, change your equation. Number two? Expectations, limited expectations. Yes. And third one? Don't compare. Don't compare. And the fourth one is, have a life with purpose. Have a life with some purpose. क्या होता है कि जिंदगी में एक समय के बाद जब आपके पास सब कुछ आ जाता है, whatever you wanted in life, you know, जो भी आपने ड्रीम किया है, अच्छा घर, परिवार, बच्चे, पत्नी, prestige, fame, whatever you dreamed of, you achieved. उसके बाद क्या? So there is a question in life sometimes. लोग बोलते हैं इसके आगे क्या? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? बच्चों को तो टाइम है ये सब स्टेज पे पहुंचने एक गाड़ी लिया बोलेंगे वो अच्छी है वो चाहिए, एक कपड़ा लिया और तो खत्म होते हैं। कुछ लोगों को होता है लेकिन there are some people they get everything they desired, सब कुछ मिल गया, वो बोलते हैं आगे क्या? Otherwise, see, there are different ways in which God will attract you towards Him. So there are some people like this also in this category. भगवान को देते हैं भर भर के जो चाहिए ले लो, उसके बाद उसको लगता है कि अभी जिंदगी में आगे क्या है, because ultimately we are seeking shelter, right? जो हमने पहले डिस्कस किया था. If you don't get that, and you may have so many other things, still you will feel frustrated, right? इसलिए इतिहास में आप देखेंगे इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, you know, all these kings actually they are known as Raj Rishis. Raj Rishi matlab in the Vedic times they are Raja also, they are Rishi also. And because they know that nothing is permanent in this world. Whatever I have, either I have to give up or it will be taken away by the force of time. They realize that. And that's how they lead their life. Then only they can establish the kingdom of Godhead. Otherwise, जो लोग इस संसार से आसक्त हैं, वो लोग धर्म की स्थापना नहीं कर सकते. Right? When you see the current government, I'm not favoring any political party or anything, but you will get to see some samples. जिसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वही संसार के लिए सब कुछ कर रहा है. That's the beauty of Sanatana Dharma. Then, when you are selfless, then only you can serve. Right? निष्काम भाव से. Yes. So I'll give two examples to make it a little simple and clear. One example is of ice cream. Ice cream सुनने खाया है. So ice cream is one example. Some people they say that ice cream क्या होता है? आप उसको ऐसे पकड़ के रखेंगे फ्रिज के बाहर निकाल कर कोल्ड स्टोरेज से, तो क्या होता है? मेल्ट होते जाता है. तो वो लोग बोलते हैं कि enjoy it before it melts. मेल्ट होने के पहले enjoy कर लो भाई. तो they say life is like that. Enjoy before it melts. ये खत्म होने के पहले enjoy करो. Right? And that's how they are in the mood of just enjoying. इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा डिंक करके, DINK, डिंक मोमेंट सुना है आपने? डबल इनकम नो किड्स. Both husband and wife they will work, they will earn a lot. बच्चे नहीं चाहिए.
क्यों भाई? Because we are ice cream. Enjoy करना है life को. We don't want any responsibility, right? But scriptures, actually, if you go to the scriptures, they don't allow such kind of life. Because anything that is created by God has a purpose. Even if you are husband and wife, you can't live like that. You have a purpose to come together to bring a new life in this world. And उसको एक नया जीवन देकर उसको, because this creation, this whole material existence is created as a facility for the living entities to get out of this world, right? तो जितने भी बद्ध जीव हैं, conditioned souls, they need some facility to take birth, right? अब उसी को बंद कर देंगे तो फिर you are not fulfilling the purpose for which you are coming together. So this is one category, ice cream वाले लोग. दूसरे होते हैं कैंडल वाले. कैंडल देखा? मोमबत्ती. वो भी मेल्ट होता है. तो कुछ लोग कैंडल वाले होते हैं, मोमबत्ती वाले. वो भी बोलते हैं ये भी मेल्ट होने वाला है. You know, light before it melts. Light the world. Right? Light the world means you serve. सेवा कीजिए, right? Give some service to the world. नेक्स्ट में आप देखेंगे बड़े बड़े जो बहुत कुछ संसार में कमाए हैं, रखे हैं, क्या करेंगे उस पैसे का वो लोग? इसलिए अच्छी बात है, अभी एक पोस्ट आया था उसमें सचिन तेंदुलकर ने 3 करोड़ दिया राम मंदिर के लिए, और कोई प्लेयर है उसने 5 करोड़ दिया, विराट कोहली ने 20 करोड़ दिया. So that's how their whatever they have, the grades of past life, based on that they are getting now. They are utilizing for the good cause. Somehow, somewhere they are connecting it with the God. I am just giving this one example. It's not that everyone of you have to go and donate. But somewhere, somehow we have to give some service to others. Because real joy is in giving service, not in receiving. Receiving तो बचपन से कर रहे हैं ना, बचपन से हमको सब सेवा ही करते आ रहे हैं. But when we see, that's why any ashram means any whether it's a householder life or a brahmachari life or a sannyasi life. And special typical taking the example of a household life. When husband and wife they come together, their purpose is to serve each other. जब आप इस मोड में आएंगे, सेवा करना है, then that will be the happy home. And when the mood is I want to enjoy, I am the enjoyer. तो enjoyment के लिए तो competition रहता है ना. Then it brings frustration. आपने पहली बार सुना होगा ऐसा कॉन्सेप्ट. But that's what our scriptures they say. Because everything is actually service. अभी क्या हो रहा है? I am giving some service to you. You are giving some service to me. In the sense that you are helping me to remember the Lord. I am helping you to remember the Lord. Similarly, parents they serve the kids. Kids they serve the parents. Right? Society will serve the government. Government is serving the society. Everyone is serving each other. Actually, there is no exception. Is there any example that the person is not serving? कोई ऐसा उदाहरण जो सेवा नहीं कर रहा है? है कोई उदाहरण? The father is serving the kids they are serving the father. Like that, if you go throughout the universe, there is one basic element that is सेवा. हर कोई एक दूसरे को सेवा ही दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. And इस सेवा का जो culmination है, the highest peak है, you will reach that when you give service to God and those who are trying to serve the God, right? आपने ऐसे कई examples सुने होंगे. APJ Abdul Kalam, उनका एक statement है. He says that when you extend your hand to someone,
then you become handsome. Handsome. Otherwise, अभी आपने देखा होगा ऐसे कई उदाहरण है. Last time जब मैं देखा था, there are so many actors and actresses in Bollywood and Hollywood and Tollywood and so many industries. दिखने से सुंदर होने से सुंदर होता है कोई? Your beauty lies not in your looks but in your heart. इसीलिए तो आपने उदाहरण दिया कि the grass is always green on the other side. आपको लगता है कि अरे वाह क्या लगती है, अच्छा दिखता है एकदम, मतलब अच्छा दिखने से अच्छा होगा गारंटी है क्या कुछ? तो भी तो फंस जाते हैं ना. आज पता चलता है अरे बाप रे किसके पास आ गया मैं. जैसे कितने हमको मिलते लोग, बाप रे. एक हमारे उधर मैं जाता हूँ प्रीचिंग के लिए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मैं बोला क्या हुआ, बोला बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत स्ट्रेस है. बोला क्या हुआ, तो मैंने थोड़ा अच्छी तरह से छानबीन किया तो उन्होंने बताया कि मेरा शादी हो गया था 6 महीने पहले. बाद में वो शादी में उन्होंने इतना मुझे अब्यूज किया. वो ठीक है मैंने सेपरेट हो गए और डाइवोर्स हो गया. फिर बोले तो अभी क्या है, हो गया ना, चले गए ना, आपको पसंद नहीं था. तो मैंने पूछा कैसे हुआ है, तो बोले इंस्टाग्राम लव था ये. बोले इंस्टाग्राम पे कैसे लव हो जाता है. मैंने देख लिया अच्छा लगा, उसने भी देख लिया अच्छा लगा और लव हो गया. मैं बोला ऐसे लव होने लगेगा तो फिर रोज एक नया नया शादी हो जाएगा. कितने लोग अच्छे लगेंगे आपको. तो शिवा से कि फिर उसने ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारा पैसा उसने लिया मुझसे. That lady was selling some around 50-60 lakhs rupees that guy took away. Somehow कैसे तो कुछ केस चल रहा था. मैं बोला ठीक है एक एग्जाम्पल होगा. फिर मेरे कॉलेज की फ्रेंड है एक, कॉलेज की फ्रेंड की सिस्टर है, वो भी एक दिन मंदिर में आई सुबह सुबह. मैं फोन की, सुबह बिजी था. मैं बोला क्या हो गया सुबह सुबह. तो बोली मैं प्रेयर करने आई हूँ भगवान से. मैं बोला क्या हुआ. बोली कोर्ट में आज केस है, प्रेम को लाला, अभी एक और ऐड हो गया राम लाला. She came to pray to Lord Krishna, चौपाटी गोपीनाथ मंदिर. तो क्या हो गया, तो उसका भी सेम स्टोरी. बोले ऐसा ऐसा हो गया. बोला ऐसा स्टार्ट कैसे हुआ. बोले इंस्टाग्राम बुलाओ. बोला यार क्या हो रहा है आजकल सोसाइटी में. बोले खाता खोल लिया. नहीं I am not on Instagram. नहीं, it's not a problem to be on Instagram. The problem is you don't go by externals. बाहरी दिखावट को देख के मत जाइए, right? Actually लोग क्या होता है कि even if you fall in love with someone, 6 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा, within 6 months. Because क्या होता है जब आप साथ में रहना चालू करते हैं, then you come to know. अभी आप बोलेंगे, अभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले 6 महीने साथ में रहते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं शादी करना. That's also wrong. But in a live-in also, I know someone just they live-in किया before marriage, but after marriage उनका 6 months में divorce हो गया. Yeah. Because उसमें भी नहीं पता चलता. Yes. कि they're not married. तो अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि पता किसमें चलता है भाई. शादी के बाद. ऐसे भी पता चलता नहीं, ऐसे भी पता चलता तो कैसे पता चलता है. See, that's why we need the education. The whole fundamental problem with this kind of case studies is that nobody has a clear idea what the life is meant for. अगर हमको साथ में आके खाली एंजॉय करना है तो this is not going to give you any solution. हमको पहले से मालूम होना चाहिए we are coming together to serve each other. Right? एंजॉयमेंट क्या है, 6 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, बराबर. हमारे प्रोग्राम का भी एंजॉयमेंट 6 महीने में खत्म हो जाएगा. In the sense, within 6 months I have some expectation from you. You also have some expectation from me. If they are not fulfilled, then it's not a exact example, but in any case you take, any relationship, if there is no service element in that relationship,
then a relationship cannot last. खत्म हो जाएगा वो। और अगर चलेगा भी तो काफी स्ट्रगल के साथ चलेगा। जब तक हम लोग उस मोड में नहीं आते, we have come together to serve, until and unless that we will not be happy. because हमने मेन पॉइंट मिस कर दिया है ना, राइट? तो आप लोग डरिए मत बिल्कुल भी। मैं जो बता रहा हूँ आपको अनुभव है ऑलरेडी, राइट? जिसको अनुभव नहीं उसको मिलेगा। बट उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। एक्सपेक्ट, see when we are servant then we will be tremendously happy. एक सेवक जो रहता है बहुत खुश रहता है क्योंकि उसका कुछ डिमांड है, सेवा ही करना है उसको। And servant doesn't mean गुलाम, he is not a slave। कभी भी लोग ऐसे सोचते हैं कि तो गुलाम बनना है आपको, अरे गुलामी नहीं है बाबा। Our position and situation is like that. We are always servant. We cannot change our position. If you try to change, then that brings frustration, stress in our life. So this is sutra number 4. Have a life with some purpose, and that purpose is to serve. एक example, एक सुंदर example है, this person कल्याणम सुंदरम, पूरी जिंदगी भर एक लाइब्रेरी में काम किया, जो भी पैसा मिलता था उससे उसने बच्चों को पढ़ाया, जो भी किया, whole life. And when he was given this award by some international agency for being such a good social worker, he got almost 30 crore. But वो भी पैसा उसने अपने पास नहीं रखा कुछ भी. He again distributed that money, and he is known as the man of the millennium. मैं इससे यह नहीं बताना चाहता हूँ कि we always have to donate money. My point to say is, whatever is our capacity to help other person with our good words, with some service, it may be some physical service, some emotional, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आज emotional की है, right? People are empty, they need someone to relieve the stress. इसलिए मैंने कहा ना कि इस जोड़ी बना लीजिए, should have someone. कितने सारे लोगों के पास नहीं रहता है, they are emotionally bankrupt inside, nobody to share their heart, and they just keep struggling inside, right? तो इसलिए एक जगह ऐसा कहा जाता है, when God blesses you financially, just don't raise the standard of your living, but raise the standard of giving. Start being a candle, and that will give you joy, and that joy no one can take away from you. कोई ले सकता है क्या ये happiness? When you serve someone and when you get that happiness, this happiness nobody can take away, right? So this is the 4th number, and the final 5th number sutra. Connect with the supreme source of happiness, that is God, right? So finally, the 5th point we have arrived is connect with God. जैसे यहाँ पे बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं, लाइट्स, इन सब लाइट्स का कनेक्शन कहीं है पावर हाउस से कनेक्ट होकर यहाँ पे बिजली जल रही है ना. विदाउट कनेक्शन टू पावर हाउस देयर इज नो लाइट. Similarly, in our life, we need some connection to a source. Unless we are connected to the source from where light is coming, our heart will remain dark. अभी हमारा हार्ट कैसा है? डार्क है. किससे? एंजाइटी, बोर्डम, लोनलीनेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, ये सब डार्कनेस से कवर हो गया हार्ट. We need to illuminate that heart with that light, right? जैसे this is it's like a joke only, but Wikipedia says I know everything. Wikipedia knows everything, right? आपको कुछ भी सर्च करना चाहते हैं Wikipedia. Then Google says उससे ज़्यादा मुझे मालूम है. I know more than that. Then Facebook said I know everybody. आपको तो सबका अकाउंट रहेगा ना Facebook के ऊपर. किसका नहीं है? अभी भी ऐसे महात्मा है
तो उसके बाद इंस्टाग्राम में बोला भाई अभी किंग मैं हूँ, आई एम द किंग इन द मार्केट, आई नो मोर देन यू। उसमें मैं इंटरनेट बोला, सब लोग चुप बैठो, बिकॉज ऑफ मी ओनली यू आर सर्वाइविंग। इंटरनेट नहीं रहेगा तो क्या चलेगा ऐसा। उसके ऊपर जो एमएसबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वो बोला किसको किसको मस्ती हुआ है भाई, बिजली बंद कर दो क्या, बिजली बंद कर दो, सारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद हो जाएगा। सो अनलेस देयर इज अ कनेक्शन, इन सब लोगों को कुछ है नहीं एग्जिस्टेंस। सिमिलरली आवर एग्जिस्टेंस is wholly and solely dependent on the source from where we are getting the energy, right? Just like there is one example of we've been knowing this Chetan Bhagat. Chetan Bhagat को जानते हैं? Book लिखा था, and based on that book there was movie also. But do you know the inside story of that? He actually came to a temple to meet Radhanath Swami, our Guru Maharaj. Just before the release of that movie, he came and he was crying actually. तो महाराज से क्या हुआ? तो बोलने लगा मेरा बुक लेकर वो लोगों ने मूवी निकाला, लेकिन उस मूवी के इसमें मेरा नाम भी नहीं है, एक्नॉलेजमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको, है ना? ये हमको भी कंपेयर नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनी बुक। आप लिखिए तो आपको पता चलेगा। He was so stressed. That time, Maharaj said to him, he gave an example of ocean. आप सबने समंदर देखा है, राइट? समंदर के ऊपर बहुत हलचल रहता है। So many waves are coming, going, so much disturbance. But inside, ocean is very calm, peaceful. So जब तक हम लोग सरफेस के ऊपर रहते हैं ओशन के, then there are so many waves of happiness and distress, they are coming, going. And as long as we get affected by that, we will not have any peace. Because the world is made like that. Right? Somebody will honor you, somebody will insult you, somebody will praise you, somebody will give गाली। होता है ना ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना कि सब जगह लोग आपको सैल्यूट करते हैं। कितने भी आप बड़े हो, कितने भी महान हो, बड़ी मिक्सचर संसार में है। So इसीलिए this Maharaj said, try to go deep down, deep down within your consciousness and connect to your inner self and try to see that beyond all these external so many things which may affect you temporarily, and that does affect, ऐसा नहीं कि उसके आपको परेशानी नहीं होती है, होती है, पर क्या करें, संसार ऐसे ही बना हुआ है। We can't change the world, right? चेंज कर सकते हैं क्या आप दुनिया को? नहीं कर सकते हैं लोग। तो किसको चेंज करना है फिर हमें? अपने आप को चेंज करना है, राइट? और इसीलिए बिगिनिंग हमने जो किया था, correct the equation of your life. Don't try to change the external things. You may try as far as possible. Circumstances, situation हम rectify करने चाहिए जितना कर सकते हैं, but कुछ लिमिट के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी हमारे जो पेरेंट्स रहेंगे वो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे हैं, जो पत्नी है पत्नी है, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो हमें फिर किसको चेंज करना है? खुद के आइडिया, क्योंकि चेंज करने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इतना चेंज करते हैं, बट दे हैव, आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, दिस स्टैटिस्टिक्स इज ए statistics 10 or 12 years back, every 30-40 seconds there is one suicide. These many suicides are every year. इतने सारे। एक बार हमारे टीचर थे, इधर लंदन में गए तो गए थे, टीचिंग कर रहे थे, तो
अभी जैसे कभी बर्थडे है किसी का, समझो अगर आपकी माँ का बर्थडे है तो आप बुलाएंगे ना, बर्थडे करेंगे सेलिब्रेट। तो ऐसे एक था, तो उसने मदर को बुलाया, कम फॉर द बर्थडे पार्टी, इनवाइटेड टू अ होटल, so they kept together and they were having some food and exchanges. After the that celebration was over, जो लड़का था उनका बेटा, वो बोलने लगा कि आज का बिल मैं भर देता हूँ। पार्टी का आज का बिल मैं भर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? समझा नहीं उनको, हमारे टीचर थे, बाद में उनको समझा कि ये तो TTMM है। TTMM बचपन में आपने खेला होगा, नो TTMM नहीं पता आपको? हाँ, तू तेरा मैं मेरा। TTMM, तू तेरा मैं मेरा। बच्चे बचपन में जो खेल खेलते थे ना, कोई अगर बोलेगा चलो आज का पार्टी मेरी तरफ से, या किसी दिन पैसा नहीं रहेगा तो तू तेरा मैं मेरा पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। We will have party, but तू तेरा बिल भरेगा मैं मेरा बिल भरूंगा। तो ये तो हमारा मजाक में चलता है इंडिया में। दे हैव टू सीरियसली, वो बोलने लगा कि आज का बिल मैं भरता हूँ मम्मी, आपका बर्थडे है इसीलिए। तो कह रहे हैं कल्चर इज देयर। क्या कल्चर है उधर? फॉरेन कल्चर में ऐसे। And when they raise the children's parents, they know that after a certain age, say for example 20, 25, children they leave the home, and parents they have to live on their own. खुद रहना पड़ता है उनको, ऐसा कल्चर है। तो मतलब see that's why people are so lonely. एज होने के बाद they feel जिंदगी कोई है नहीं अपना, फिर क्या करेंगे लोग? सुसाइड करते हैं, या फिर वही सेम ओल्ड हैबिट्स। एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि ओल्ड पीपल दे गो टू द रिवर और ओशन फिशिंग, नेट पकड़ के बैठते हैं 5-5 घंटा। जिंदगी में कुछ है? कुछ नहीं है, मच्छी पकड़ोगे। क्या करना है जीवन में? अभी आपका एज हो गया, उसको हम हमारे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं वानप्रस्थ। आफ्टर अ हाउसहोल्ड लाइफ there is a retired life. What do you do in the retirement? Retirement you do some more activities connected to the God, because now the time is less and you have to perfect your life, right? बोलो वैसे, या फिर इधर जाएंगे, कुछ स्पोर्ट खेलेंगे, कार्ड खेलेंगे। यहाँ विदिन बॉम्बे also I have seen, जो विरार से ट्रैवल करते हैं ना चर्च गेट तक, जिसने जिंदगी में 30-40 साल ट्रैवल किया है फ्रॉम विरार टू चर्च गेट, ऐसे लोग जब जॉब पूरा हो जाता है दे स्टिल ट्रैवल फ्रॉम विरार टू चर्च गेट। व्हाई? घर में चैन नहीं आता है हमको, क्योंकि पूरा जिंदगी ट्रेन में निकल रहा है। सो दे बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम विरार, कम टू द चर्च गेट, फ्रॉम अगेन चर्च गेट दे बोर्ड द ट्रेन, गो बैक टू विरार, देन दे गो। दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रेन वाला, लेकिन हमारा ऑफिस वाला भी एग्जांपल है ना। कंडीशनिंग इतना हो जाता है, ऑफिस में गए तो बोर लग रहा है आज घर में, तो घर किसके लिए बना हुआ है भाई? घर आपने घर बनाया है एंजॉय करने के लिए, लेकिन घर में भी एंजॉय नहीं कर सकते। प्रभुपाद तो कैसा एग्जांपल देते हैं, बंगाल एक बड़े son of a very aristocratic wealthy person, he had a habit of stealing. तो क्या करता था वो? हावड़ा स्टेशन की उधर मार्केट में जाता था और कुछ ना कुछ चोरी करता था उधर से। बड़ा इसका आदमी, लड़का, बड़ा हैबिट है, वो चोरी करके फिर कैसे तो घर पे जाके हाँ आज का हो गया, now I'm feeling happy. Habit. इसीलिए हम लोग see that's why if we don't have the purpose in life, or when we don't have the connection to our basics, जिंदगी ऐसे बीत जाती है। और फिर वापस next chapter to begin in the next life, फिर जन्म लेने का, फिर स्कूल जाने का,
फिर वही स्कूल में टीचर के साथ पढ़ाई करने का, फिर जॉब जाने का, फिर अगेन शादी करने का, पता नहीं कौन सा होगा, इंस्टाग्राम वाला होगा, फेसबुक वाला होगा। As the Kaliuga is advancing, and then again same मच्छी पकड़ो, ये विराट से चचगड़ आ जाओ, and it goes on, goes on, goes on, and that's how our life is spoiled without getting the जो inner craving है heart के अंदर, craving for the love and satisfaction, happiness, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसके बिना जिंदगी ऐसे ही बीतते जाता है, and time passes so fast, आपको पता भी नहीं चलेगा। We had our first session last week, right? Yes. एक हफ्ता बीत गया, पता चला आपको? पता चला क्या किसी को? This is called as imperceptible effect of the time. Imperceptible मतलब you cannot perceive only कि कैसे टाइम जा रहा है। It goes so fast. अभी ये सेशन हो गया, अभी अगले सेशन में जा रहा हूँ अयोध्या। 25th time going to Vrindavan, अयोध्या। I'll come back. Again we will have session. फिर बोलेंगे यार टाइम कैसे चलेगा पता नहीं चला। So that's why जितना भी टाइम जैसे मिलता है, we should be we should become wise and try to connect with our. See, भारत में किसी को बताने की जरूरत नहीं है गीता क्या है, रामायण क्या है, धर्म क्या, संस्कृति क्या है। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, isn't it? You know better. More shlokas, more stories, many things. नहीं, पर आजकल के बच्चों को नहीं इतना, स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, 100 के बच्चे देखो उनको गीता पूरा बाय हार्ट भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को आजकल मॉडर्न साइंस भी स्कूल में बंद कर दिया है। लेकिन आप लोगों को तो पता है। उनको डालने हैं। Yes. Yes, that's why we need some programs for the kids also. Because they are the future. और इसके लिए नहीं कि they are future, sometimes लोग क्या बोलते हैं future of the country. अरे पहले खुद का तो future बना लो, country के लिए तो बनेगा। आज आप उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनका ही घर कल बर्बाद हो जाएगा, राइट? उनका ही घर अगर अच्छा बनना है तो हमें उनको संस्कार देना जरूरी है। Otherwise, we will regret only in the future. As the time and modernization of the world is advancing, the people are becoming. अभी ठीक है, राम मंदिर का स्थापना हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, some auspicious thing, but along with that we have to educate people also. Without education, temples they just remain temples. But अच्छा fortune है हमारे कि the current government is looking in that direction also, in the field of education also. Otherwise, Prabhupada का statement है, Prabhupada कहते हैं कि why there are so many temples in India, just in very bad condition. Because वहाँ पे जो लोग हैं, they are taking temple just as a source of livelihood. Many temples, traditional many temples in India. जो पुजारी है वहाँ पे जो है वो लोग उसको जस्ट अपना एक रोजी रोटी का जरिया बना के रख देते हैं। But otherwise, temple is meant for education. जब आप मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, along with that you get the education कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में तकलीफ क्यों होती है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब चीजें जो बताएंगे आपको तो मंदिर can prosper. Then it becomes really a temple, mandir, like that. So these are the 5 sutras, and next session, next to next week, हम लोग फिर उसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे. I hope you all are connecting with what I am speaking. Yes. If you are not connecting, please let me know. I'll try to simplify it as much as possible. Sometimes spiritual topics they become a little difficult if in the beginning you don't express. धीरे धीरे क्या होगा फिर बोलेंगे यार ये तो बहुत ये हो रहा है. Then you will just give it up. So please do express your thoughts, your feedbacks, whatever you want to. If you want me to add a few more examples,
or some other stories. I can always try as far as I can. Sure. Hare Krishna. Hare Krishna. So you have any questions regarding today's session or in general? No questions means there are two possibilities. Either you have understood fully or you have not understood anything. So I take it on the positive side that you understood everything. Okay, thank you so much for coming together, taking out your time. And it's so precious, so valuable. इतने टाइम में तो आपने घर में बहुत सारा काम कर लिया होता है ना, 1-2 घंटे में वो सब छोड़ छाड़ के आप यहाँ पे आ गए. It shows that you want to learn, right? And with that you are giving me an opportunity to also do some service to all of you. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. So we will have a kirtan or we will do one round of the Mahamantra. As the Kirtan and the Mahamantra both. Okay, so first we do the Mahamantra and then we have a very good powerful kirtan. We have Aman Prabhu with us. He's a very powerful Mridanga player and he's a Jivan Prabhu and he's a Jitendra Prabhu and he's a Kailash Prabhu. So The first and the last one they are all there. yeah. So we will have a kirtan, but before that, please bring those bags. So I am introducing something which is not unknown to you. Please don't get frightened. Don't get surprised. You all know this. Should I close? Can you get some knife or scissor? Yes, sure. आप लोग हैं ना यहाँ पे कि कहीं जा रहे हैं? नहीं, बाद में डिनर है ना उसके लिए खा के जाऊंगा. Oh. Prashadam. Yes. So that's a good addition. That's why Prabhupada ने ISKCON में एक अच्छा चीज किया है. After every program there has to be prasad. Yes. बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैं दबाया. हाँ बंद करना होगा. The way to the heart is through our belly. इधर है ऑन ऑफ का बटन. Hare
So there is a prasadam prayer. I mean, you all can start serving. I'll just recite the prayer, and next time I'll give you the WhatsApp, and you can also read that. Mahaprasade Govinde, Namo Brahmane Vaishnave, Namo Brahmane Vaishnave. Swalpa